नहीं जाती। मेरी मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली ये फिर से कट गया था। यस सर। एक्चुअली ये पता नहीं, ये लाइट चली जाती है फिर आ जाती है। वैसे यूजुअली रोज नहीं होता ये, तो पता नहीं आज क्या हुआ। एनीवेज, तो हम कहाँ थे? हमने सो फार ये प्रूव किया था। तो अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, then we got this thing, मतलब यहाँ तक हम पहुंचे थे x n k minus f, मतलब एक सब सीक्वेंस हमें मिली, या एक सीक्वेंस you can say is greater than equal to epsilon, although x n k minus y n k is less than equal to 1 by k for all k, less than actually. So इससे हमें मिला इनका लिमिट सेम होना चाहिए, यानी since f is continuous, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि then f of a limit k approaches infinity, f of x n k is equal to f of limit k approaches infinity, x n sub k, this is equal to f of zeta, and limit k approaches infinity, by the same reasoning, y sub n sub k is equal to f of eta. कहने का मतलब ये, it implies that limit as k approaches infinity, f of, क्योंकि सॉरी देखो ना इसी से गड़बड़ होती है, which is the same thing as f of zeta, because हम दिखा चुके हैं नीटा और जीटा सेम है, राइट? सो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट f of x n k minus f of y n sub k जो है, it must go to 0 as k approaches infinity. but यहां से हमें मिल रहा है, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है is greater than equal to epsilon for some positive number for all k belonging to the set of natural numbers. So what does that mean? That means, which is a contradiction, which is a contradiction to 1. And therefore, f must be uniformly continuous. अब हमें चेक कर सकते हैं, हमने देखा था एक फंक्शन को जो कंटिन्यूअस थी लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं थी, जो ना पहली एग्जांपल ली थी मैंने, f of x is equal to x square, और मैंने दिया था x belongs to R, जो कि क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल नहीं था. Now suppose I am taking f of x equal to x square, but x belongs to some closed bounded interval, then this must be uniformly continuous, है ना? क्योंकि अब मैंने डोमेन को रखा है, by this theorem I should get that this function is uniformly continuous on this interval. It is indeed, because अगर मैं लूं, now take any epsilon, let let epsilon be any positive number, then I've got f of x1 minus f of x2. अगर मैं लूं for all x1, x2 belonging to this closed bounded interval, would be equal to x1 square minus x2 square, which would be equal to x1 plus x2 into x1 minus x2, which would be less than equal to x1 plus x2 multiplied by x1 minus x2, which would be less than equal to maximum of the modulus of A modulus of B into mod of x1 minus x2. So whatever these points, this thing would be independent. वो मैं ऐसे बताऊंगा. Now let delta be equal to, I should write, नहीं मुझे शायद यहाँ 1/2 करना पड़ेगा, है ना, कि twice करना. क्योंकि ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, maximum of these two, so this must be twice. So if I take delta to be epsilon divided by twice, which is some finite number, no issue, then whenever
x minus x2 is less than delta, it automatically implies f of x1 minus f of x2 is less than, अब देखो ये less than delta by this thing है, right? तो अगर ये less than this है तो बचेगा क्या? Epsilon. So अगर ये whenever this is less than delta, this becomes less than epsilon. And x1, x2 कहीं पर भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमने इसका वो ये factor था, इसका मैं explain. What I'm trying to say is that it becomes uniformly continuous as long as you have a closed boundary interval. So that was this result about uniform continuity. अब हम examples कर सकते हैं, काफी सारी हो सकती हैं, जो तुम भी कर सकते हो. कोई function जो uniformly continuous है, कोई continuous नहीं है. So I would like you to do a home assignment कि जैसे अगर मैं लूँगा f of x is equal to sine of x squared. Of course it's continuous because it is the composition of two continuous functions. तो तुम्हें दिखाना है is not uniformly continuous on the positive numbers, that means 0 to infinity. I just had 2 points जहां पर ये possible नहीं है. और क्या, जैसे ये हो सकता है f of x is equal to, should I take this, sin x, sin x चलेगा, चलो sin x is uniformly continuous on 0 infinity. अब देखो यहाँ पे important है, मतलब ये uniformly continuous है although this is not a closed bounded interval. अगर closed and bounded interval है तो continuous function uniformly continuous हो भी सकती है, नहीं भी सकती. लेकिन अगर मेरे कहने का मतलब है, if you have an interval like this, then any continuous function on this interval is automatically uniformly continuous. लेकिन अगर ये closed bounded interval नहीं है तो ये कभी-कभी uniformly continuous हो भी सकती है और कभी-कभी नहीं भी हो सकती. ये 2 एग्जांपल्स तुम करोगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है. इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना और इसमें कोई स्पेशल पॉइंट्स लेना, जैसे I think चल जाएगा ये n pi by 2 and n plus 1 pi by 2. मैं देखूंगा तुम कैसे करो. इन 2 पॉइंट्स पे ट्राई करो इसको उड़ाने के लिए ना, कि तुम कैसे साबित करोगे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है. यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करो ये दिखाने के लिए कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है. And I think that finishes our unit 2. थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा. Now the question is of unit 3. तो उसको मैं थोड़ा सा introduce करूँ. So it's about series. In fact, it's more important than the sequences, right? We usually deal with series rather than sequences. अब series क्या है कि तुम्हारे पास एक sequence है, again sequence है, तुम्हारे पास A1, A2, so on and so forth. Now, what you do, you can also think of summing the terms of these sequences. ये जो sum करना है, तो if this is a sequence, we write it as summation n runs from 1 to infinity an. लेकिन तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी इंटेग्रल summation a k runs from 1 to infinity. तो इसका मतलब क्या है, इस टर्म, इस जो ये सिग्मा का सिंबल है, इसका मतलब है ये जो है इंडेक्स है, इनको वैल्यू दो 1 से इन्फिनिटी तक. यहाँ पर भी इसका एक ही मतलब है, ये तो कोई मतलब ही नहीं रखता एक्चुअली. ये लोअर एंड अपर लिमिट ए का क्या है, अगर वो सेम है तो ये सेम नोटेशन. Now the question is, can we assign it a meaning? क्या हम infinitely many terms को ऐड करके इसको कुछ meaning दे सकते हैं, right? तो लेकिन we can think of it like this. We can think of it like this. I can think of another sequence. इस sequence से मैंने एक और sequence बनाऊंगा. S1 को मैं रखूंगा A1, S2 को रखूंगा मैं A1 plus A2, S3 को रखूंगा मैं A1 plus A2 plus A3. तो इस सीक्वेंस की मदद से, जो ऑलरेडी एक है, जो इसकी इंडिविजुअल टर्म्स है इस सीरीज की, इससे मैं एक और सीक्वेंस बनाऊंगा, यानी Sn होगा फिर A1 plus A2 plus so on and so forth up to An. इसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ
पार्शियल सम्स, यानी आधा ही हमने सम किया, पूरा नहीं किया, ऑफ द सीक्वेंस an। ये जो सीक्वेंस है ये S1, ये जो Sn, n runs from 1 to infinity, एक और सीक्वेंस हमें मिली with the help of the original sequence. Now we say that if this sequence converges, suppose Sn converges to some L as n approaches infinity, we say the series converges. Agar sequence of partial sums converges to some L belonging to a real number as n becomes very, very large, we say ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करती है और हम लिख देते हैं समेशन n runs from 1 to infinity an is equal to L। मेरे कहने का मतलब जब हम ये लिखें तो हम मतलब इसका ये है कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो कन्वर्ज करती है टू L। जब भी हम इसको इस तरह से लिखें वो मतलब है, इसका मतलब ये प्रोसेस है। और ऑफ कोर्स अगर ये डाइवर्ज करे ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, तो वी से ये जो सीरीज है समेशन an n runs from 1 to infinity, इट डाइवर्जेस। डाइवर्जेंस का मतलब ये जो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम्स है ये डाइवर्ज करती है। अगर ये कन्वर्ज करती है तो सीरीज कन्वर्ज करती है, और ये सीक्वेंस जो हमने पुरानी सीक्वेंस से ली तो वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज, इस पे हम चेक करते हैं। आई थिंक इसको आज खत्म करते हैं, कल अच्छे से शुरू करेंगे। आज ये बीच बीच में इंटरप्शन भी रहा और ये खत्म होने वाला है, सो लेट्स एंड इट। और अगर सीआर है तो उसको मैं कहूंगा कि वो अटेंडेंस ले ले। आज 25 आए हैं तो मैं नोट कर रहा हूँ ये। सर वो होगी, हाँ तो डिप्टी सीआर होगा तो वो करेगा ये चेक। आज अटेंडेंस होगी सर, लेकिन उस टाइम 28 स्टूडेंट्स थे प्रेजेंट। तो फिर 2 कहाँ गए फिर? चलो मैं 28 मान लेता हूँ, शायद फिर वो कनेक्ट ना कर पाए। ओके लेट्स एंड इट हियर।